what exactly happens there is Amazon uses those previous data to analyze about the next year trends. Similarly, how does Swiggy or Zomato uses? It uses the real-time data it gets from the roads. Like हमें उनको जो भी data मिलता है, like whatever the data get from the Google Maps or something else. Based upon that, they choose the most optimized delivery route. So all this comes under the data analytics. So how it actually works? See, first we have the raw data. Means we have the data. We do some analysis on that particular data. After doing some analysis, we get some insights, or we get some dashboards. Like in Power BI, we use it to make dashboards. So we basically get some dashboards or visualizations. From there, we can get some insights. From those insights, we can take smarter decisions about our businesses. Okay. So, what are the current opportunities available in this data analyst role? So, there are majorly four roles available: data analyst, business analyst, BI developer, data scientist kind of things. So, upon this, the most like evergreen role is the business analyst role. And if you do data scientist, then it's very good. Just as all quiz, uh, does anybody know what's the full form of BI? Business intelligence. Uh, Correct. It's BI stands for business intelligence. So for BI, we have a lot of tools. Like for data analytics, why do we do data analytics? We do data analytics for some kind of business intelligence kind of things. So for this business intelligence things, we have a lot of tools. Like for example, we have TableView, we have Power BI, we use Python scripts also, we have SQL also, we have Excel also. So majorly Excel is for beginner level, SQL is for intermediate, Python is for advanced, and Power BI is star tool, which is mostly used for interactive dashboards kind of things. So why should we use Power BI? Power BI is easy to learn. It's interactive dashboards, real-time insights, used by top companies, and it also gives us powerful visualizations. Okay. So, let me just open Power BI applications. Objective subset so what would be our first step? So our first step would be to import a data. Like for importing data, we have a lot of things. Like we can import a blank report also. We can import Excel workbook also, SQL server also, or from somewhere else. So let me show you what are the different types of available. So under file sections, we can import any kinds of file like beta Excel file, beta CSV file, XML file, JSON file, or we can import a complete folder also. We can also import a PDF. Okay. So if like we can also connect multiple databases also with our Power BI application. Like we can connect our SQL Server database, Oracle database, IBM database, PostgreSQL database, Teradata, SAP. We can Google BigQuery. We can also connect a lot of online or your in desktop SQL servers also. Like for example, uh, if you want to connect your own SQL software present in your laptop, you can connect that also. We can also connect Azure services also we can connect it. We can also connect the Microsoft services present in like SQL database, warehouses also we can connect it. Okay. So like this way we can connect. But for today we would be importing data using a folder. Let me just connect it. So after selecting the folder, you would get a pop-up like this. That pop-up, just click on browse. Select the folder from where you want to take your data. So my data is present inside Power BI. From there, I will be importing this classic models data. You click on OK, you would be seeing something like you will get the entire data set and you will be shown as you will give it multiple options in the left hand bottom, which is right side bottom. Combine, load, transform data, and cancel. I don't know why data.
We can also we have an option over here after you turn on after you start your application. We'll get an option like here, get data. Click on get data, go to files, select folder, then connect, then browse and select the folder that you want to import. मैंने एक zip फाइल भेजा था zip फाइल को जहाँ पर आप लोग ने एक्सट्रैक्ट करके रखा वो वाले को यहाँ पर कनेक्ट करना है. Okay, so I would be connecting this and I would be going into my Power BI folder. From there, I would be importing this classic models dataset. And there we can see like we have total of 8 sheets available in that particular folder. So what we would need to do is we would be converting each sheet. Now this is a combined query. This one is known as this. We can see all the queries over here. So what I would be doing is we would be like it's the currently Power BI is doing it that like an entire data set. But when I will perform on each sheet, first I need to break it. So for that I would be making different queries for each sheet. So I would be doing it? I would be just simply clicking, double click on it, add as new query. Then like something will like this will come. Then double click on it, and then just simply create. Then हमको अपने हम लोग का उस फोल्डर में टोटल 8 शीट्स थे. सो हमको हर एक शीट को एक डिफरेंट क्वेरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे कि हम हर एक शीट पे डिफरेंटली अलग से operation कर पाए. So for that, I would be converting all the 8 sheets into different queries. So for that, click or double click on that particular sheet, then choose add as new query. Then just rename it. बाकी सारे शीट्स का भी कर लेते हैं. तो वापस जाओ, then employees के लिए कर लो add as new query. Okay. Here, add as new query employees.csv and just and तो जल्दी जल्दी सब लोग कर लो. So what I did is I converted each different sheets into different queries. So now I have a total of 9 queries available. What we can do is just customers. We can see the entire sheet over here. So we have a total number of items of 120. तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद like, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है. एक ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है कि जैसे कि मान लो
मेरे को कि दो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है मेरा, ये वाले कॉलम है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, ये कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। अब मान लो मेरे को इन दोनों को मर्ज करना, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मर्ज करके बनाना है फुल नेम का एक। तो व्हाट आई वुड बी डूइंग दिस, सिंपली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ऊपर में एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद क्या करना है, यू जस्ट सिंपली नीड टू सिलेक्ट दिस एंड मर्ज करना होगा। हाउ वी वुड बी मर्जिंग इट, यहाँ तक सबका हो गया। सबने शीट ये कर लिया है ना, यहाँ तक सबका आया। ठीक है, तो बिफोर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमारा इसमें बहुत बार क्या होता है, खूब एक्स्ट्रा स्पेसेस रह जाते हैं। तो फॉर एक्स्ट्रा स्पेसेस हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू ट्रिम। जैसे कि मान लो कि मेरा इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको ट्रिम कर सकते हैं। तो हाई वुड बी डू दिस, फॉर्मेट में जाओ, या फिर ट्रिम का ऑप्शन ऊपर में फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट क्लिक करोगे, फिर ट्रिम का ऑप्शन, क्लिक ऑन ट्रिम इट। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिम। अब एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि हम लोग का जो भी हम लोग जो भी स्टेप्स यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग को राइट साइड में शो हो जाता है। ठीक है, कि मैंने इंपोर्ट सीएसवी किया, मैंने फिर डेटा टाइप चेंज किया, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। फिर मैंने टेक्स्ट को ट्रिम कर दिया। तो अब मान लो यहाँ पर मेरा कंट्रोल जेड अगर तुम चलाओगे तो यहाँ पर कंट्रोल जेड नहीं चलता है। यहाँ पर कंट्रोल जेड का एक ही ऑप्शन है कि तुम इसको क्लिक करो। इसकी मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा वो जो मैंने डेटा को ट्रिम किया था वो ऑप्शन हट जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वापस मैं ट्रिम करूंगा, तो यहाँ पर देखो वापस से ट्रिम का ऑप्शन आ गया। क्लियर है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि अब मैंने, मान लो पहले मैंने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया क्योंकि फर्स्ट नेम होगा देन लास्ट नेम होगा, तो फर्स्ट नेम को मैंने सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट लेफ्ट, देन यहाँ पर ऊपर में मर्ज कॉलम का ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन मर्ज कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखो यहाँ पर एक तो पॉपअप है, पॉपअप में क्या पूछ रहा है कि कॉलम को कैसे मर्ज करना है। तो डेफिनेटली दोनों, जो हमारा फर्स्ट नेम होगा, जो टाइटल होगा, उसके बीच में देयर मस्ट बी स्पेस। फॉर दैट वी वुड बी सिलेक्टिंग a space. Then what must be the new name of the column? So let's keep it as full name. Just click on open to see. Uh, two different columns got merged into a single column named full name. यहाँ तक हुआ, सबका समझ आया सबको कैसे हो रहा है, हाउ इट्स एक्चुअली हैपनिंग। हो गया सबका कि कैसे मर्ज हुआ, समझ आया ना। अच्छा, एक बार मैं करके दिखा दूँ वापस से कि मैं अगर बिना ट्रिम किए किया करता तो कैसे होता। तो वैसे ही कंट्रोल जेड का तो होता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कट कर दिया। मैं ट्रिम टेक्स्ट को भी काट दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, वापस से मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वाला कॉलम आ गया। शिफ्ट लेफ्ट मर्ज करता हूँ, ठीक है, स्पेस से। देख रहे हो यहाँ पर कुछ कुछ जगह में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, कुछ कुछ जगह में कम स्पेस आ रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इज कि
बहुत बार होता है ना कि फर्स्ट नेम के बाद हम एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस रह जाता है, तो वो वाला एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जा रहा है जो हम मर्ज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको पहले ट्रिम किया था कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होगा नेम के बाद वो ट्रिम हो जाएगा पहले। वो ट्रिम होने के बाद हम उसको मर्ज करेंगे। तो वापस इसको मैं उंडो कर देता हूँ एंड ट्रिम कर लेता हूँ पहले। ट्रिम स्पेस। ठीक है। अब जिसके हम लोग ने मर्ज किया, वैसे हम सिंपली उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट? तो डिवाइड कैसे करेंगे? अब मान लो मेरा कस्टमर का नेम, हम मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें से इनका जो भी नेम वाला पार्ट है, मतलब इसको मेरे को दो कॉलम में डिवाइड करना है। लाइक फर्स्ट नेम का एक अलग कॉलम, लास्ट नेम का एक अलग कॉलम, ऐसे करके मुझे डिवाइड करना है। तो व्हाट आई वुड डू दिस, ऐड कॉलम, यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। ओके। एक होता है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, एक होता है टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस डेलीमीटर इज? डेलीमीटर कोई भी एक जो यूनिक सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल स्पेस, कॉमा, हाइफन, एट द रेट, ये जो जो है, जो मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनको डेलीमीटर बोलते हैं। तो अगर मैं टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर मेरा डेलीमीटर क्या है? स्पेस है। तो टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर करने से क्या होगा? जो मेरा नया कॉलम बनेगा उसमें मेरा फर्स्ट टाइम चल जाएगा। ओके। सो लाइक वी कैन डू इट। तो हम क्या करेंगे? ऐड कॉलम, यहाँ पर एक्स्ट्रा टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर करते हैं। ठीक है। डेलीमीटर में क्या होगा? मेरा स्पेस होगा, एंड यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में क्या होगा? हमको डेलीमीटर कहाँ खोजना है? डेलीमीटर जिसके होता है ना कि किसी का मिडिल नेम भी होता है, किसी का लास्ट नेम भी होता है। तो इसमें दो ऑप्शन होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट, एक होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द इनपुट। ठीक है। एंड ऑफ द इनपुट से क्या होगा कि जैसे कि मेरा मान लो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, इसमें कितना डेलीमीटर है? दो दो डेलीमीटर है। सिग्नल के बाद एक डेलीमीटर है, गिफ्ट के बाद एक डेलीमीटर है। तो अगर मैं स्कैन फ्रॉम लेफ्ट करूंगा तो ये वाला डेलीमीटर को फर्स्ट पकड़ेगा एंड नए कॉलम में ऐड कर देगा गिफ्ट स्टोर्स। अगर मैं स्कैन फ्रॉम राइट करता हूँ, मतलब स्कैन फ्रॉम दिस एंड ऑफ द इनपुट करता हूँ, तो पहला डेलीमीटर क्या आएगा? क्या आएगा? तो मेरे नया कॉलम में क्या बनेगा? नया कॉलम में जाएगा स्टोर्स। ठीक है। एंड अगर मान लो हमको कुछ डेलीमीटर स्किप करना है, तो उसका ऑप्शन भी होता है नंबर ऑफ डेलीमीटर्स टू स्किप। तो बाई डिफॉल्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द इनपुट ही कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैंने डेलीमीटर स्पेस दिया हुआ है। ओके। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट में आ गया टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर बोल के, क्या है? ग्राफिक बोल के आ गया। तो यहाँ पर देखो पहला नेम में इसका लास्ट नेम क्या था, जो सरनेम क्या था? ग्राफिक था। और इसमें देखो गिफ्ट स्टोर्स था, तो वैसे देखो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा ग्राफिक गिफ्ट स्टोर्स। इसको ट्रैक करके इसके जस्ट बाजू में भी ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ इसको रीनेम, डबल क्लिक करो, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम करके इसको कर दो सर। ठीक है। समझ आया कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एंड अब मान लो इसमें तो देखो, इसमें तो पूरा नेम रह गया और इसमें डिवाइड हो गया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करो, एक्सट्रैक्ट में जाओ। ठीक है। फिर इसमें क्या करना है? टेक्स्ट फॉर डेलीमीटर, डेलीमीटर पे स्पेस डाल दो और ओके। तो ये हो गया मेरा रीनेम करके। और ठीक है, समझ आया सबको कि कैसे मैंने एक कॉलम को दो डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर दिया, एक्सट्रैक्ट करके। उस पर्टिकुलर कॉलम से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरा कॉलम बनाया, एंड पहले वाले कॉलम से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोई दूसरा कॉलम नहीं बनाया बस। क्लियर है सबको कि कैसे मैंने ये किया?
how the extract function is working. ऐसे मैं segregate कर सकता हूँ. Actually, we would be doing is first of all, let me just simply merge. Let me then I will show you what why is exactly training needed. So select this first row, then click on shift left. So these columns are getting selected. Then just simply click on where we are getting an option. Go to transform. Here we are getting an option of merge columns. Just simply click on it and you will get a pop-up like this. Is my pop-up visible, Rishikesh? Yes, Bhaiya, it is visible. Okay. So here in the separator section, we would be choosing space because definitely between the full name we have space and I would be renaming it as full name. So our new column name would be full name and both the first name and the surname would be separated by a space. So when I click on OK, what exactly happening is uh, those two columns got merged into one single column named as full name. So here we can see is uh, in some of the rows, the names are having extra spaces and in some there the space is low. Why is exactly this happening? Because whenever we type the name, sometimes we do not we type extra space in the name. So because of that, it's happening. So, if if we don't use a separator instead of space, if I use a separator like comma, then what exactly happens? If I click on comma and the name is full name, those name got separated using a comma. See, for example, in this first row, there is a space after carry, but there is no space after G. So what does this mean? In some of the rows, there are some extra spaces after the first name. So first we need to trim. So how I will be trimming it? To select this column, click on format, then choose trim, and simply it will trim the text. So now I would be merging them again. Then again, click on merge columns, separated by space, and then the new column name would be. So now you can see that there is just one space. The spaces between all in the space after the first name in all of the rows is similar. So this was the reason why training was used. Like the similar way we merge two columns, we can also divide two columns. We can divide one column into multiple columns. So for that, we need to go to add column section because definitely when I divide one column into two columns, we are adding one. So for that, we would be going to add column first. Then select on this, then click on extract. You click on extract, there are multiple things visible like length, first characters, last characters, range, text before delimiter, text after delimiter, text between delimiters. So what this delimiter exactly is? Delimiter is any kind of special character, length space, at the rate, hyphen, or anything. So what I would be doing is I would be choosing here text after delimiter. Okay. So what exactly delimiter here is? Delimiter is a space between the full name. So delimiter space, and after that I have some advanced options like from the start of the input and from the end of the input. So for here, uh, like in the second row, we have two delimiters. So when I will choose the option as from the start of the input, what exactly will happen is the delimiter would be detected over here. So in the new column, gift and gift stores would be stored. But if I choose as from the end of the input, the delimiter would be detected over here. So in the new column, only stores would be there. So I would be by default, I would be choosing from the start of the input and click on OK. So if I go at the end, you can see a new column has been created. Text after delimiter. I will drag it, bring it,
and then I just rename as surname. So now what we can see is from this original column, a new column has been generated with name as surname and having the middle name and the surnames. Like for this gift, signal gift stores. This is the first name, this is the middle name, this is the surname or the last name. So in this, we are having the middle name and the last name. Now in this column, I just want to give the first name. So what I would be doing is go back to transform. Okay, go back to transform, click on extract and click on text before delimiter and simply give delimiter a space. So now only the first name would be there in the column and just rename it as first name. Okay, so next is so, like in the similar way, when we rename it, we get a lot of options. Okay. So here, when we see credit limit, we can also change the data type as fixed decimal number. So what exactly it will show? A credit is definitely something related to money, right? So it will convert the type into a currency type, and uh, it will be separated by commas. Like this way you can change the data type for a particular thing. For here, for sales representative employee number, it's currently in the form of ABC, means it's in the currently form of a text. I can also convert it into a whole number. Want to then differentiate. Let's move to differentiate employee. So similarly, here also if I want like if I want to extract something from this image. Okay, from this email if I want to extract. Like we have a domain name as @classicmodelcars.com, right? So I just want to remove this domain name and just want to extract the uh, email ID of that particular thing. So I would be doing it similarly. I would be using the extract function, and where I was using a delimiter as space, here I would be using the delimiter as icon. And in the same way, we can do it. Clear? So the next thing is here in the orders query, what we can say is the first one is the order date. It's currently in the form of date. Required date is also in the form of date. But what we can say is our shipping date, the date at which the order got shipped. That's currently in the form of text ABC format. So I would be changing it to date format. Okay. So what I would be doing is replace current. And we change the data type of the date from text to date. Here, like this, we going to do it. This is known as data cleaning. We are cleaning the data. We are removing the errors from the data. Similarly, in payments, product lines, products, we have multiple things available. Okay, options also available. If, for example, in here we have options like transpose, transposing the entire sheet, reverse rows, count rows, multiple things are available. Okay, so one thing just that I want to say is
Here is null. In this particular row, the address line 2 says null. So what does this null mean? Can anyone just explain what does this null is? Okay. Null मतलब generally क्या होता है data मतलब we don't have any information or we don't have any data. So in Power BI for the abbreviation for null is everything must be written in small, not in caps. Okay. So whenever we are writing it in a form of in caps, we are writing null. So it means it's a data, and null is a data over here. But I need to change it to the null that Power BI understands. What does it mean? Like I need to replace this capital NULL with small NULL. So how I would be doing is select on replace values, select on this entire column, go with the value to find capital NUL and replace it with small NUL. Okay. So now this small NUL is the actual null that Power BI understands. अब इसमें से बताओ जो हमारा जो कस्टमर्स वाला शीट है तो in this particular sheet which rows are not necessary for analysis, which rows are not important for analysis. Rows which contain them, we can remove those. But before that, let me just explain it. For example, over here, phone number doesn't actually contribute to any kind of analysis. What kind of analysis you would be doing using phone number, right? So phone number is not required for analysis. Similarly, address is also not required for any kind of analysis and not address to also. So it would be simply deleted. So these three columns were not at all contributing to any kind of analysis. Okay. Why I am keeping city? Because from city we can analyze in which particular city how much order do we get, in which particular state how much order do we get, in which postal code how much order do we get, in which country how much order do we get. Like this simpler way, like which employee gives more orders to the company. Like in this way, we need to keep it. Okay. So let me just watch this one time. Just keep it one watch columns. Okay. So similarly, I remove for this now in employees. In employees, everything is needed. Email ID, I don't believe in any kind of email ID is actually needed. Okay. So email ID is also not needed, deleted. Similarly, in offices, what I would be doing, keeping the phone number of that particular office or that particular address of that office. It's not needed, right? Only the city of that particular office is enough. So remove this phone number, address line 1, address line 2, because these things don't really contribute. Territory is also not needed, deleted. Postal code here is not needed because definitely offices are only present in one area, not in all areas. So remove that also. Country we can keep it, keep city and the state. These three are important. So like this in this way we need to recognize which particular columns actually contribute for analysis and which actually do. So in this way we need to analyze it. So I'm presenting another. So in this particular sheet, in this particular query, can anyone uh,
Just pointed out which particular columns are not really needed for analysis. Whenever we do data cleaning, this is the entire part of data cleaning. So whenever we do data cleaning, first remove the rows which are really not contributing at all. Remove those columns. Then focus on those which are having null values or some duplicate values. Then focus on duplicate values. Just do all the unnecessary columns. Contribute to now to share a status, correct? So I would be removing status and comments. Delete. Similarly, in payments, everything is related. Can anyone just point out a mistake in this particular sheet? Capital column column headings are as first row. So what I would be doing is come over here. We have an option here as use first row as headers. Just simply click on it. So now the first row becomes the column names. Clear? Now you can see that the this column HTML description column every values are null, and for image also every values are null. So this is not actually needed. So simply similarly in products. Okay, clear? I believe so. The next thing is like for example, now we need to detect if this particular sheet is having any kind of duplicate values. So how I would be doing it? Simply click on it, double click, and find, and you will be getting an option of remove duplicate. Before that, let's just simply do it. Count rows. So how many number of rows are there? 122 rows are there. Okay. So can anyone just say what mistake did I do over here? Because whenever you use any kind of mathematical operations or any kind of operations inside this Power Query editor. So this is the Power Query editor where we were working. This is under the Power Query editor. So in this Power Query editor, you do the transformation. So the data cleaning part is done over here. So whenever if we apply any kind of operations like count, uh, or find the mean or find the median, it will replace the entire sheet with that particular value. So that happened. It removed the entire sheet and just returned me the data 122. So I lost entire sheet. But yeah, I can get it back by removing this particular operation. So we had total number of 122 columns. Okay. So now I would be removing duplicates from this. After removing duplicates, you can still see we have 122 rows available because uh, there were no duplicate customer numbers available in this particular field. But for example, if I just edit this last row with, for example, if I edit it with four, if I edit 496 with 495, what will happen? Replace values. I will replace the value from 496 495. So now the last two rows have the common customer number. Now if I apply remove duplicates, see now the count of the rows has become 121. Means it removed one row from the sheet. So I would be uh, getting it back and doing it. Got it? How we would be detecting about
duplicate rows, duplicate values in the particular sheet. नंबर तुमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है कि मान लो अब ये मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये मेरा नल है बहुत सारा, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ। replace values, transform, replace values, null, small null, okay. See, when you simply hover over that particular column, what you will see that 49% is valid, means in this particular sheet only out of 129, 49 are having values and rest 73 columns doesn't have any values. So what this exactly means that 60% of this column is unnecessary. So we would simply remove this column as well, because it's also having a lot of null values. If anywhere you get a lot of null values in that particular column, even if that particular column is important, but if it has a lot of null values, means it actually would तो तुम्हारा थोड़ा उसको दिक्कत करेगा जब एनालिसिस करोगे। whenever you will try to do any kind of analysis, it will disturb your analysis. A lot of errors might come. Okay. So for that, simply remove that particular column if you see that the number of del values are very high. So really we can do it. But here. Now, what exactly happens is whenever we see null values in few of the rows, what we exactly do is either we remove that row, or what we can do is we fill that row with random data. Okay. Wherever you get that null, either remove that particular row or replace that null with random value. So what I would be doing here is I would not be removing it, I would be filling it. I would be filling it by here we get an option over here, fill option. So one option is down, one option is up. If I apply down, so what will come? 1165 would be null would be replaced by 1165. If I choose up, null would be replaced by 1505. Let me just do it. If I do down, so null got replaced by 1165. Now if I do up, null would be replaced by 1504. See, null got replaced by 1504. Like in this way, we can replace the null values in a particular sheet, in a particular data set. So अब हम लोग का ये वाला null value replace हो गया, ठीक है। तो this complete sheet now seems to be very good, ठीक है। ये बढ़िया लग रहा है ना, इसमें null value नहीं है। देखो सब में एक बार होवर करके चेक कर लो, कहीं पे तो null नहीं आ रहा है, या फिर एक बार रिप्लेस करके भी चेक कर लो, ठीक है। तो एम्प्लॉय में भी सिमिलरली कर सकते हो। अब देखो ये वाले एरिया में क्या आ रहा है कि यहाँ पर भी नल है, बट मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता ना एक्चुअली। मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट है, जो ये जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 102 है, जो मर्फी है, ये इसका टाइटल क्या है, इसका जॉब टाइटल है प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका पहले जो नल ही रहेगा ना, तो इसको मत कर देना, इसको रिमूव मत कर देना कि इसमें नल आ रहा है तो इसमें फिल कर देते हैं, या फिर इसमें इस रो को रिमूव कर देते हैं। तो वीडियो नीड टू चेक कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर नल वैल्यू रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली नल वैल्यू रहेगा। अगर जैसे हमारा हमारा क्या बोलते हैं, हमारा कॉलेज का मान लो, फाउंडर फाउंडर किसी को रिपोर्ट करेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। तो वो वाला फील्ड तो उनके लिए नल ही रहेगा ना, उसे वही हमारे यहाँ पे नल रहेगा। ऑफिस के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पर नल है, नल रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जहां जहां पर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर फिल कर सकते हैं वहां पर फिल करो, या फिर डिलीट कर दो या फिर रहने दो, बट डिलीट करने से पहले चेक करना कि इफ इट इज if it won't affect your sheet, or if it won't affect your data. Okay. तो इसको बस सेव कर लेते हैं। Delete sync। मुझे तो अगर बताओ किसको ईआर डायग्राम याद है? तुम्हें फोर्थ सेम के हो ना, फोर्थ सेम का कौन कौन हैंडल करना, मतलब फोर्थ सेम सेकेंड ईयर कौन कौन? बताओ कोई भी ईआर डायग्राम क्या हो? हाँ भैया, ईयर डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, जो टेबल्स है उनके बीच का रिलेशन शो करता है। Okay. तुम यहाँ पर हाउ जो दे एक आर एक रिलेटेड। यहाँ पर तुम एक एक जो शीट्स है तुम उनको एक टेबल के तरह कंसिडर कर सकते हो। हाँ भैया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर साइड में, मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में जाओगे तो तुमको पूरे के पूरे जो हमारा डेटा सेट था उसका तुमको एक ईआर डायग्राम दिखेगा। कि यहाँ पर जैसे कि पेमेंट्स आर कनेक्टेड, आर हैविंग अ रिलेशन विद कस्टमर्स। कैसा रिलेशन है? प्रॉपर्टीज में जाकर देखो कैसा रिलेशन है। मेनी टू वन का रिलेशन है, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल पेमेंट्स, बट वन पेमेंट वुड बी बिलोंगिंग टू वन कस्टमर ओनली। तो मेनी टू वन का हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली फिर कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स के बीच में ये भी कैसा होगा, इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसका प्रॉपर्टी भी मेनी टू वन होगा। बिकॉज डेफिनेटली वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, बट वन ऑर्डर कैन बिलोंग टू ओनली वन कस्टमर। सिमिलरली ऑर्डर डिटेल्स में, ऑर्डर डिटेल्स का मैं रिलेशन चेक करूंगा प्रॉपर्टीज में जाके, तो क्या हो रहा है, ये भी मेनी टू वन हो रहा है। Okay? अगर यहाँ पर बहुत बार गलती भी हो सकता है, बट तुम इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, मोस्टली सही रहता है। ओके, तो सिमिलरली ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो इसका। अब एक और चीज देखने का है यहाँ पर, जैसे कि तुम लोगों ने प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब पढ़ा होगा ना, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन कॉमन में आएगा। इसलिए तुम इसको सिलेक्ट करोगे तो देख रहे हो यहाँ पर कस्टमर नंबर, इस वाले को जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो तो देखो यहाँ पर कस्टमर नंबर हाईलाइट होकर आ रहा है। तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, कस्टमर नंबर हाईलाइट होता है, मतलब ये क्या है, एक का प्राइमरी की दूसरे का फॉरेन की, ऐसे करके ये कस्टमर नंबर के वाया कनेक्टेड है। सिमिलरली जब मैं इसके लिए चेक करूंगा तो इसमें भी देखो कस्टमर नंबर से रिलेटेड है। इसमें क्लिक करूंगा तो ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर से रिलेशन है। फिर ऑर्डर डिटेल्स एंड प्रोडक्ट्स में क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट कोड से रिलेशन है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट आइटम में करूंगा तो प्रोडक्ट लाइन में रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर एक और कुछ और रिलेशन भी है, ठीक है। जैसे कि ऑफिस एंड एम्प्लॉयज का, ऑफिस एंड एम्प्लॉयज किससे रिलेटेड है, ऑफिस कोड से रिलेटेड है। और ये पूरा एक अलग ही एंटिटी है, ठीक है। समझ आया यार डायग्राम इसका? इसको बोलते हैं मॉडल। तो डीबीएमएस में जिसको तुम लोग ईआर डायग्राम बोलते थे, यहाँ पर इसको बोलते हैं मॉडल व्यू। ये बनाना नहीं पड़ता, ये तुम बस शीट्स कनेक्ट करो, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड बना देगा। ये बनाना नहीं पड़ता, अगर कुछ गड़बड़ रहे तो या यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। सो अब नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर मॉडल व्यू होता है, यहाँ पर टेबल व्यू भी है, कि मैंने जो जो टेबल यहाँ पर बनाया है मैं सारे टेबल को देख सकता हूँ। फाइनल जो भी मेरा डेटा टेबल था, जो मेरा
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो डेटा है मैं उसको व्यू कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज शायद मैं बताना भूल गया, कोई छोट बात नहीं। अब नेक्स्ट है कि अब मेरे को बनाना है विजुअलाइजेशन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ले लो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स ले लो। टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो फर्स्ट विजुअलाइजेशन। यहाँ पर तुम इसको जैसे कि एक्सेल में करते थे सिमिलरली यहाँ पर आराम से इसको बड़ा करो, बोल्ड कर लो, इटैलिक्स कर लो, फॉन्ट चेंज करना फॉन्ट चेंज कर लो। ओके, ये कुछ पार्ट हो गया। ओके, एक बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया। अब मेरे को इसमें कोई सा भी चार्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल चलो मैं बार चार्ट बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, डोनट चार्ट, पाई चार्ट, कुछ भी बनाना बना सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो इसको तुम ड्रैग भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है कि तुमको यहाँ पर जब भी जाओगे तुम यहाँ पर ऑर्डर्स में जा चलो। ऑर्डर्स में जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट कोड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है। अब जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है क्वांटिटी ऑर्डर्ड, एक कॉलम हो गया प्राइस ईच। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से कि टोटल अमाउंट कैसे हो रहा है। तो वो कैसे होगा, तो वो मेरा होगा, ठीक है, वो मेरा कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर तुम सिंपली जाओगे, यहाँ पर तुमको यहाँ पर न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखेगा, न्यू कॉलम करो एंड न्यू कॉलम में फॉर्मूला में डाल दो। इसको बोलता है तुम्हारा, ठीक है, क्या लिखने का इसमें, प्राइस ईच इनटू, क्या लिखोगे, ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर, फिर एंटर। तो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर एंड प्राइस ईच को मल्टीप्लाई करके टोटल एक नया कॉलम बना दिया। कॉलम को रीनेम कर लो, रीनेम कर लो टोटल। ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर हो रहा है, इसमें तुम्हारा इसका चेंजेस स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैं अगर चेंज कर दूं, इसे चेंज कर दूं, डेटा अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे कि तुम्हारा एक्सेल में होता है। इट्स वेरी सिमिलर टू एक्सेल। ठीक है, अब मैं इसका व्यू में जाता हूँ। तो एक मैं लूंगा प्रोडक्ट्स, एक हो गया, मैं प्रोडक्ट कोड ले लिया, एक प्रोडक्ट कोड ले लिया। सेकंड में ले लेता हूँ उसका टोटल। ठीक है, तो देखो एक बन गया ना विजुअलाइजेशन। जैसे कि ये वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड का टोटल सेल इतना है, इसका इतना है, ये वाले प्रोडक्ट कोड का इतना टोटल सेल हुआ, इसका इतना सेल हुआ, इसका इतना सेल हुआ, इसका इतना सेल हुआ, इसका इतना सेल हुआ, ऐसे करके सारे के सारे का जितना भी हमारा प्रोडक्ट कोड था सबका उसने शो कर दिया। समझ आया कि कैसे मैंने एक चार्ट बनाया एंड उसमें डेटा डाला। तो हर प्रोडक्ट का उसके साथ कितना, उसका टोटल सेल कितना हुआ, वो वाला मैपिंग करके यहाँ पर उसने एक चार्ट बना दिया। अब मान लो मेरे को इसमें कुछ फिल्टर्स लगा। फिल्टर्स में जैसे मैं क्या लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे डेटा में आया, ठीक है, मान लो मैं एक फिल्टर लगाता हूँ, किसी वही डेटा प्रिंट हो जिसमें टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन 3000 मान लो। ठीक है, टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन 3000।
तो यहाँ पर सिंपली आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, शो आइटम्स व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। फिर यहाँ पर अप्लाई फिल्टर। पहले की तरह साथ ओके, थोड़ा फिल्टर पॉट चेंज कर देते हैं। फाइव थाउजेंड कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। ये बात बताता हूँ क्यों क्यों नहीं हो रहा, देखता हूँ मैं देख के, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लो मेरे को उसका अगर चेंज करना है, इसका विजुअलाइजेशन चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर स्टाइलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो तुम इसका क्या चेंज कर सकते हो, बार्स चेंज कर सकते हो। अगर तुमको बार्स का कलर चेंज करना है तो, भाई बार्स का कलर ब्लू है, मान लो मैं इसका बार्स का कलर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, तो बार कलर ऑरेंज हो जाएगा। इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकता हूँ कि कितना मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को इसका वॉलपेपर चेंज करना हो, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड है, उसको बैकग्राउंड चेंज करना, चेंज करके करना है मुझे कुछ ब्लू टाइप या ग्रीन टाइप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा के वॉलपेपर का इसने चेंज कर दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसका, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन चेंज दी, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मान लो तुमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसके बाद यहाँ पर जाके तुमको अगर इफेक्ट्स डालना है इसमें कुछ, अब जैसे कि इसका पीछे का वाइट है, तो सिमिलरली मैं मोर करूंगा, उसमें कुछ रेड में ले आऊंगा, तो देखो यहाँ पर रेड कलर चेंज हो गया। ब्राउन कर रहा हूँ, ब्राउन हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब सिमिलरली मान लो तो अब जो मेरा डेटा है, डेटा डेटा कैसा रहेगा, डेटा का भी कर सकते हो। हेडर आइकन्स भी चेंज कर सकते हो, जो लिखा हुआ आ रहा है उनको भी चेंज कर सकते हो। तो यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग, यहाँ पर जो भी तुमको चेंजेस करने हैं यू कैन चेंज। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर मेरा ऊपर में क्या है, सम ऑफ टोटल बाई प्रोडक्ट कोड, तो मैं अगर इसको बाई कोड से हटा दूँ, बस प्रोडक्ट रखूँ, तो वहां पर भी चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली हेडिंग का अगर तुमको स्टाइल बदलना है तो वो भी बदल जाएगा, ठीक है। फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट चलो ये कर दिया, वहां पर भी फॉन्ट भी चेंज हो जा रहा है। तो लाइक दिस वे तुम इसको चेंज कर सकते हो, बीचों बीच में आएगा, बीचों बीच में कर दिया, ठीक है। क्लियर है कि कैसे मैं इसको, इसका विजुअलाइजेशन का, इसका जो भी कलर्स है मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो और कुछ भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एक डोनट चार्ट ले लिए, ठीक। इसमें भी अगर मैं डेटा ऐड करूँ, इसमें कुछ और डेटा ऐड करूँगा, इसमें इसे बताओ इस पे क्या क्या ऐड करूँगा, कोई भी एक आइडिया दो।
क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? क्वांटिटी ऑर्डर्स, एंड क्वांटिटी ऑर्डर्स एंड ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर यहाँ से ले लिया एंड क्वांटिटी ऑर्डर यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा करके शो कर दे रहा है। लाइक दिस कि कौन से पर्टिकुलर कोड का, कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना ये है। ठीक है, अब इसमें भी अगर इसको देखते हैं इसको तो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने 200 का डाल दिया, अब इसमें सिर्फ 200 के ऊपर का ही डेटा विजिबल है। ओके, दिस इज द थिंग। अब मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। इसकी मान लो ये जो मेरा है, अब यहाँ पर देखो, मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, वो आ जा रहा है। इसमें मैं एक को लेता हूँ, यहाँ पर कौन कौन सा मार्क हो रहा है तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करूंगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, ये तो हमारा जो ये हमारा जो डोनट चार्ट बना, ये ऑर्डर के लिए बना, ये बना प्रोडक्ट के लिए। तो मतलब, तो ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन कौन से ऑर्डर पे कितना कितना गया है, देखो वो उतना करके हाईलाइट हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना ऑर्डर नंबर 10178 में 413 पीस गया है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर दिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट S18 हमारा इतना गया है। अगर मैं इसे कुछ और चूज करूँ तो देखो चेंज हो जा रहा है, जो हाईलाइट है वो चेंज हो जा रहा है, इसके लिए वापस चेंज हो जा रहा है, इसके लिए चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके तुम जिसको सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये यहाँ पर मार्क करके शो करो। ओके, अब मैं इसको भी, अगर मैं इसको सिलेक्ट ना करूँ, अगर मैं इसको अगर ये चेंज करूँ, उसका थोड़ा विजुअलाइजेशन चेंज करूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज चेंज। ये इसको जो बोलते हैं हम लोग का, जो ये है हमारा, ये वाला जो जो कलर मार्किंग्स है, कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन सा कलर है, कौन सा ऑर्डर नंबर का क्या क्या कलर से मार्क किया गया है, इसको लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो लेजेंड का पोजीशन कहाँ रखा हो भी, सेंटर राइट में रखा हो। टेक्स्ट कौन से कलर का है, ये है, इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, ब्लैक कर दिया। इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक्स भी कर सकता हूँ, इसका कुछ फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो फॉन्ट भी चेंज हो गया। सिमिलरली टाइटल, टाइटल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका क्या ऑर्डर नंबर, ये लेजेंड का मेरा टाइटल नंबर क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ सिर्फ ऑर्डर से, ऑर्डर से। तो ये हमारा लेजेंड में चेंजेस हो गया। अब मेरा क्या है, डिटेल्स। डिटेल्स मतलब कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये जो मेरा लिखा हुआ है ना कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर का क्या ये है, ये मेरा हो गया डिटेल लेबल्स। तो अभी फिलहाल का डिटेल लेबल्स मेरा आउटसाइड में है। मैं इसको इनसाइड में भी डाल सकता हूँ, तो देखो पूरा खिचड़ी जैसा बन गया। नहीं तो फिर आई कैन डू इट प्रेफर आउटसाइड, आउटसाइड हो सकता है आउटसाइड तो, या फिर फुल आउटसाइड कर दिया मैं। ठीक है, अब सिमिलरली जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज लिखे हुए आ रहे हैं ये वाले, इसका भी कलर को मैं, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक्स कर सकता हूँ, इसको ब्लैक कर सकता हूँ, एंड इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे करके चेंजेस आ रही है। एंड देन अगर मान लो मेरे को उसका कलर चेंज करना है, मुझे क्या पूरे जनरल में जाके इस वजन को, अगर मुझे इस पर्टिकुलर जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको मेरे को कुछ अफेक्ट देना है। अभी ये वाइट है, इसको मेरे को कुछ कलर देना है, क्या कलर दो बताओ। अच्छा लग रहा है ये?
तो ऐसे करके तुम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। विजुअल बॉर्डर्स में जाके डेटा फॉर्मेट कर सकते हो। इफेक्ट्स में इफेक्ट्स अपलोड किए अभी। ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रॉपर्टीज में जाके यू कैन चेंज इट। ठीक है। तो बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखो वहां पर बड़ा हो रहा है वो। विथ करने से विथ भी बड़ा हो रहा है। सिमिलरली लाइक दिस वी कैन डू इट। तो एक बहुत सिंपल सा ये डैशबोर्ड बन गया। और ये डैशबोर्ड क्या शो कर रहा है मेरा? ये डैशबोर्ड मेरा शो कर रहा है और कि मेरा कौन से प्रोडक्ट का कितना, कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना टोटल सेल्स हुआ है, एंड कौन से ऑर्डर पे कितने प्रोडक्ट्स गए हैं। मतलब कौन से, मतलब ऑर्डर नंबर, एक कोई भी एक ऑर्डर पे टोटल कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसमें तुम जैसे कि मैंने ये वाला बनाया, इसके अलावा तुम और भी बहुत सारा बना सकते हो। इसलिए तो ऐसे विजुअलाइजेशन पे जाओ तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तुमको स्कैटर चार्ट बनाना है, स्कैटर चार्ट बनाओ। तुमको अगर कुछ ट्री टाइप का बनाना है तो ट्रिम ट्री टाइप का बनाओ। तुमको अगर कुछ गोवाच टाइप का बनाना है तो गोवाच टाइप का बनाओ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तुम इसमें से कुछ भी बना सकते हो। ओके। तो बैकग्राउंड को चेंज कर दो, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बताओ तो क्या कलर रखो। हम्म, तो लाइक दिस वे यू कैन डू। और भी एक वर्कफ्लो समझ आया, इंपोर्ट डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा के विजुअलाइज किए। विजुअलाइजेशन एक दो विजुअलाइजेशन बनाए तो मिलकर वो डैशबोर्ड एक बन गया। शेयर इनसाइट्स, हम लोग ने पावर क्वेरी में क्या क्या किया, नल को रिमूव कैसे कर सकते हैं वो देखा। रीनेम कॉलम्स भी देखा। कॉलम को स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी देखा। डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं वो भी देखा। डेटा टाइप भी चेंज करना देखे। मर्ज करना भी हम लोग ने देखा। ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में भी जैसे कि मैंने क्या किया, ये वाला पर्टिकुलर रो है, इसको पूरा ही रिमूव कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ने डेटा क्लीनिंग भी देखा। हाउ कैन वी डू द डेटा क्लीनिंग। विजुअलाइजेशन भी बना के देख लिया हम लोगों ने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ने डैक्स फॉर्मूला, एक हम लोग ने बहुत एक बेसिक डैक्स फॉर्मूला देखा, वो जो मैंने जो एक वहां पर किया था ना। we we added an extra column, right, for finding the total sales. Then we multiplied two columns. So this is the DAX. Uh, it was a very basic DAX. So डैशबोर्ड डिजाइन का बेस्ट पैटर्न्स, यूज टू मेनी कलर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब मुझे नहीं आता। ये डिजाइन मुझसे नहीं होता। लेकिन मैं मेरी क्लाइंट था, मेरे से ये सजावट नहीं। देन नेक्स्ट इज, ठीक है। तो अब हाँ, एक और चीज दिखाना था। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या है, ये मेरा एक डेस्कटॉप व्यू बन रहा है ना। अगर मान लो ये तो मैं डेस्कटॉप में देख रहा हूँ, मेरे को एक मोबाइल व्यू चाहिए, तो मैं मोबाइल व्यू के लिए क्या करूंगा? तो यहाँ पर लेफ्ट में नीचे में एक ऑप्शन है, मोबाइल लेआउट, उसमें क्लिक करो। ठीक है। इसको ला के रखो। ओके। ब्रिंग दिस, जूम दिस। ओके। नेक्स्ट, गेट दिस ऑल्सो।
So in this way, you can do the mobile view also. You can have a mobile view also. Okay, like this was a desktop view. This is the mobile view. I hope I am clear.